Bismillahirrahmanirrahim. Now let's move towards paragraph number 4. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. Construction work in urban areas is usually slow and time consuming. The use of transport and equipment at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. It not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue. पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब हम इसके डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग का मुताला करते हैं. द फर्स्ट वर्ड इज यूजुअली, आमतौर पर, जनरली और ऑफनली. कंज्यूमिंग, खर्च होने वाला. डिवोटिंग, ईटिंग. द नेक्स्ट वर्ड इज ड्रिलिंग, सुराख करना, बोरिंग. पियर्सिंग, तेज, नोकीला. श्रीलिंग, डिस्टर्ब, परेशान करना. इंटरप्ट और कैन से डिसरप्ट. फटीग, थकावट, टायर्डनेस. सो डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं. एंड द फर्स्ट लाइन इज अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, शोर की आलूदगी का एक और माखिज यानी कि एक और जरिया वो क्या है, इन अर्बन एरियाज इज द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स. शहरी इलाकों में तामीराती जगहों पर होने वाला काम है. Another source of noise pollution in urban areas is the work on construction sites. शहरी इलाकों में शोर की आलूदगी का एक और माहिज तामीराती जगहों पर होने वाला काम है. कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज, शहरी इलाकों में तामीराती काम, इज यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, आमतौर पर सुस्त और वक्त सर्फ करने वाला होता है. इनके वक्त लेने वाला काम होता है शहरी इलाकों के अंदर तामीराती काम. कंस्ट्रक्शन वर्क इन अर्बन एरियाज इज यूजुअली स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग. शहरी इलाकों में आमतौर पर तामीराती काम सुस्त और वक्त सर्फ करने वाला होता है. द नेक्स्ट लाइन इज द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स. इन तामीराती जगहों पर ज़राए नकलो हमल और सामान, इट्स ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड और छेदो सुराख करने की आवाज़ें इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. शोर की आलूदगी का एक बड़ा ज़रिया है. द यूज़ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड इक्विपमेंट एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, इट्स ग्रिलिंग एंड पियर्सिंग साउंड इज़ अ बिग सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन. इन तामीराती जगहों पर ज़राए नकलो हमल, सामान और छेदो सुराख करने की आवाज़ें शोर की आलूदगी का एक बड़ा ज़रिया है. द नेक्स्ट लाइन इज इट नॉट ओनली डिस्टर्ब द जनरल पब्लिक. ये ना सिर्फ आम आवाम को परेशान करता है, आम आवाम की ज़िंदगी के अंदर खलल पैदा करता है, बट आल्सो अफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स. तामीराती कारकुनों पर भी असर अंदाज होता है. बाय कॉजिंग मेंटल फैटिग, ज़हनी थकावट पैदा करके. इट नॉट ओनली डिस्टर्ब द जनरल पब्लिक बट आल्सो अफेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बाय कॉजिंग मेंटल फैटिग. ये ना सिर्फ आम आवाम को परेशान करता है बल्कि ज़हनी थकावट पैदा करके तामीराती कारकुनों पर भी असर अंदाज होता है. तो पैराग्राफ की रीडिंग के बाद अब हम इस पैराग्राफ की सिंपल इंग्लिश को पढ़ते हैं. एंड द फर्स्ट लाइन इज अनदर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज इज द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है वन मोर रीजन. अनदर सोर्स के लिए वन मोर रीजन का वर्ड यूज किया गया. फॉर नॉइज पोल्यूशन इज द वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स. वेरी सिंपल. And the next line is construction work in urban areas is usually slow and time consuming. तो usually के लिए हमने mostly का word use कर दिया. Mostly the progress of this work is slow and time consuming on construction sites. The next line is
The use of transport and equipment at construction sites, its grilling and piercing sound is a big source of noise pollution. So simple English है transport used on construction sites, fencing and piercing are also major causes of noise pollution. Next one is it not only disturbs the general public but also affects the construction workers by causing mental fatigue. तो इसकी सिंपल इंग्लिश है कि इट इज नॉट ओनली द कॉज ऑफ मेंटल फिटीग फॉर द वर्कर्स बट आल्सो कॉजेज एंजाइटी फॉर पीपल. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा पैराग्राफ नंबर 4 भी अपने अख्ताम को पहुंचता है